गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चंद्रयान 3। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसरो ने जो है प्लान किया है कि चंद्रयान 3 के जो रोवर और जो लैंडर होंगे उनका नाम जो है चंद्रयान 2 के ही लैंडर और रोवर के ऊपर रखा जाएगा, विक्रम और प्रज्ञान। तो चंद्रयान मिशन भी जो है वो थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो इसरो ने लॉन्च करना है, और उसको सेफ लैंडिंग के लिए लॉन्च किया जाएगा विक्रम लैंडर के थ्रू। और रोवर जो है प्रज्ञान वो भी लूनर सरफेस पर जो है वो रीच करेगा। अब चंद्रयान 2 की तरह जो है इसमें ऑर्बिटर तो नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जो है चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर को जो है वो यूज़ किया जाएगा। और चंद्रयान 3 जो है उसमें 3 मेजर मॉड्यूल होंगे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ठीक है। और LVM-3 जिसको GSLV-MK3 रॉकेट कहते हैं, उसके थ्रू ही जो है इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने का प्लान है मिड जुलाई में। अब चंद्रयान 3 के पेलोड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें शेप का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड, जो कि स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स करेगा अर्थ की लूनर ऑर्बिट से। फिर लैंडर पेलोड्स होंगे इसमें 4, राम्भा नाम से, जो कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे लूनर आयनोस्फेयर की। चेस्ट, जिसका नाम जो थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर देखेंगे लूनर सरफेस की। फिर इल्सा जो है वो सिस्मिसिटी को मेजर करेगा जब भी जैसे ही लैंड करेगा जो है रोवर मून के ऊपर। और एक होगा एलपी जो है वो प्लाज्मा डेंसिटी और उसकी वेरिएशंस को एस्टिमेट करेगा। रोवर प्लेलोड जो है वो APXSC और लिब्स नाम के होंगे, जो कि जो है एलिमेंटल कॉम्पोजिशन देखेंगे लैंडिंग साइट की। ठीक है। अब ये मिशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 100 किलोमीटर की लूनर ऑर्बिट में जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको कैरी करेगा। और जब विक्रम लैंडर मॉड्यूल जो है वो सेफली लैंड कर जाएगा मून पे, तब वो प्रज्ञान जो है उसको डिप्लॉय करेगा। प्रज्ञान क्या है आपका? जो है रोवर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रज्ञान जो है वो केमिकल एनालिसिस के लिए जो है वहाँ से जो है वो लूनर सरफेस से जो है वो जो मटेरियल उठाएगा और जो है उसको एग्जामिन करने के लिए जो है वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड्स। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, उन्होंने देखा है कि कैसे सन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक स्पेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हम बहुत क्लोज आ गए हैं सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड है क्या? ये मीन वैल्यू है जो कि सोलर वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की जो है एवरेज वैल्यू निकाली जाती है विजिबल हेमिस्फेयर में। उसका रिलेशनशिप भी देखा जाता है कि कैसे वो इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है उसका क्या रिलेशनशिप है। अब सन के पास कोरोना है, आपको पता है, जो आउटर शेल होती है सन की। फोटोस्फेयर है जो विजिबल सरफेस होता है, और एक होता है क्रोमोस्फेयर जो मतलब ट्रांसपेरेंट लेयर होती है सन के ऊपर। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल करंट्स की तरह जनरेट होता है, और जो अभी तक का हमारा ये सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम अभी तक जितने भी स्टडी किए हैं हमने ये फोटोस्फेयर के अराउंड की है। लेकिन जो न्यू फाइंडिंग्स हैं वो ये कह रही है कि हमने क्रोमोस्फेरिक हाइट्स पे भी जो है ये जो है सोलर मैग्नेटिक फील्ड देखा है, और ये फोटोस्फेरिक हाइट्स के ही जो है वो उसी से रिलेटेड है। तो जो वैल्यू है वो कम है ऑफ कोर्स फोटोस्फेरिक हाइट से, जो वैल्यू ऑफ सोलर मीन मैग्नेटिक फील्ड की है जो क्रोमोस्फेयर पे, वो कम है फोटोस्फेयर से। लेकिन ये पता लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड ऑफ द सन से ही आ रहा है, वही उसका एक्चुअल सोर्स है, चाहे वो क्रोमोस्फेयर पे हो चाहे वो फोटोस्फेयर पे हो। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिदार। ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिसर्च रिपोर्ट कह रही है कि लिदार मार्केट जो है वो 22% से जो है वो बढ़ रही है 2022 और 2030 के बीच में। तो लिडार टेक्निक क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक। ये बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग मेथड होता है जिसमें लाइट को एक पल्स लेज़र की तरह जो है वो किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ पे छोड़ा जाता है, चाहे वो किसी एयरक्राफ्ट से चाहे किसी हेलीकॉप्टर से। और वो जब रिफ्लेक्ट बैक होकर आता है तो उससे हम डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। समझ लो हमको एक जो है नदी का हमको ये देखना है कि उसकी विड्थ कितनी है। तो उसको नापने के लिए जो है हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हम लिडार इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। एक पल्स लेज़र जाए, वो एक कोना जो है वो आपके हेलीकॉप्टर से एक कोने जो है वो रिवर का, और दूसरे कोने जो है रिवर का, उसको जो है
मेजर कर ले तो उससे हम जो है वो अर्थ जो उस रिवर की विड्थ को पता कर पाएंगे, ठीक है। तो नियर इंफ्रारेड लेज़र का इसमें यूज़ किया जाता है और वाटर पेनिट्रेटिंग ग्रीन लाइट भी यूज़ की जाती है अगर हमको सी फ्लोर या फिर रिवर बेड की एलिवेशंस को मेजर करना हो, ठीक है। तो लिडार टेक्निक कैसे वर्क करती है, जैसे मैंने आपको बताया लाइट को भेजा जाता है और वो जब वापस आती है तो हम डिस्टेंस देखते हैं कितना उसने ट्रैवल किया, उसी के बेसिस पर हम अब उसकी एलिवेशन को जो है वो जो है कन्वर्ट कर पाते हैं। तो लिडार टेक्निक इतनी फेमस हो चुकी है कि वो नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट्स दोनों को मेजर करने के लिए काम आ रही है। इवन शोरलाइन मैप्स, डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाने में भी जो है इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है, तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट्स या एरियाज़ को हम एक डिस्टेंस से जब ऑब्जर्व करते हैं, खासकर सैटेलाइट्स या एयरक्राफ्ट से, उसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में विजिट किया है क्योंकि उनकी जो फर्स्ट विजिट थी इजिप्ट में। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो है वो उसमें जो सबसे पुराना है वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, जो कि एंशियंट इजिप्शियन पिरामिड जितने भी हैं तीनों के तीनों जो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा उनमें सबसे पुराना है और लार्जेस्ट भी है। और ये गीज़ा प्लेटू पर ही लोकेटेड है, वेस्ट बैंक ऑफ नाइल रिवर पर, मॉडर्न सिटी ऑफ कायरो में, ठीक है। तो ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू है इसको खुफू ने बनाया था, जो कि सेकंड किंग थे इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के, और इसको सबसे पहली बार एक्सकेवेट किया गया था 1880 में सर विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पेट्री द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें तो इसकी हाइट लगभग 146 मीटर्स है, इसका बेस जो है वो 230 मीटर्स का है और 2 मिलियन ब्लॉक्स ऑफ स्टोन से इसको बनाया गया है। लाइम स्टोन ब्लॉक से इसको जो है कोर बनाया गया है। इसका जो इंटीरियर बरियल चैम्बर है वो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट से बना है। अगर हम पिरामिड्स ऑफ गीज़ा की बात करें तो 3/4 डायनेस्टी पिरामिड जो हैं वो इरेक्ट किए गए हैं नाइल रिवर के पास नदर्न इजिप्ट में, खुफू, खाफरे और मेंकावरे। तो जो नदर्न मोस्ट और ओल्डेस्ट पिरामिड है वो खुफू ने बनाया है, जो कि सबसे लार्जेस्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। ये टॉपिक भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने कंट्री का हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है और कन्फर किया है, रादर, ठीक है, दिया नहीं है, कन्फर किया है। तो इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है ये। 1915 में इसको शुरू किया गया था ऑर्डर ऑफ द नाइल के जो है वो नाम से, और हेड्स ऑफ स्टेट, क्राउन प्रिंसेस या फिर वाइस प्रेसिडेंट्स को ये दिया जाता है इजिप्ट द्वारा, या फिर उन्होंने कोई ह्यूमैनिटी को इनवैल्यूएबल सर्विस दी हो उसके लिए जो है ये उनको दिया जाता है। प्योर गोल्ड कॉलर होता है इसमें, ठीक है, और फेरोनिक सिंबल्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। हेक्सागोनल पेंडेंट होता है इसमें कॉलर के पास। और जब भी जिसको भी ऑर्डर ऑफ द नाइल मिलता है जब उनकी डेथ होती है तो उसको उस पर्सन को सल्यूट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड जो है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिमांड स्लो डाउन चल रहा है, तो इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि वो साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन के ऊपर जो है वो एक ट्रेड डील साइन करे। तो साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है, जो कि 1910 में साइन की गई थी, बनी थी रादर। और इसके कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, एस्वातिनी, ठीक है, जिसको हम पहले स्वाजीलैंड कहते थे। इसका हेडक्वार्टर याद रखो साउथ अफ्रीका में नहीं है, विंड होक जो कि नामीबिया में है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसको इस साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन को जो है साउथ अफ्रीका ही एडमिनिस्टर करता है शुरू से, और ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन गया है एक ऐसा जिसमें सिंगल टैरिफ है और कोई भी कस्टम ड्यूटी आपस में कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर इशू नहीं करती हैं, और इनकी जितनी भी कस्टम ड्यूटी है वो एक ही तरह की होती है, सिंगल कस्टम टेरिटरी बन चुके हैं ये, और जो भी इसमें इन कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करेगा तो उनको सिंगल टैरिफ ही यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्किन बैंक, साइंस एंड टेक के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्किन बैंक, याद रखो इंडिया का नहीं, नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्किन बैंक जो है वो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में अभी इनाग्रेट किया गया है। तो ये ऐसा स्किन बैंक है जहाँ पर कैडेवरिक स्किन, कैडेवरिक मतलब एक मरी हुई बॉडी की, मतलब कॉप्स की स्किन जो है वो प्रोसेस और प्रिजर्व की जाती है ताकि उसको बाद में बर्न विक्टिम्स के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सके। जो भी पर्सन जब मरता है तो उसके मरने के 6 घंटे के अंदर वो जो है अपनी डेथ के 6 घंटे के अंदर जो है वो अपनी स्किन को डोनेट कर सकते हैं। और मिनिमम एज जो है डोनर की वो 18 साल होनी चाहिए, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, चाहे 100 साल का पर्सन हो। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हैं जो जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, स्किन कैंसर, एक्टिव स्किन डिसीज़ या सेप्टिसीमिया से अगर कोई किसी पर्सन की डेथ हुई है
तो वो अपनी स्किन को डोनेट नहीं कर सकते हैं। जो स्किन है उसको 85% ग्लिसरॉल नॉट ग्लाइकरॉल ग्लिसरॉल सोल्यूशन में रखा जाता है और लगभग 5 साल तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। अब कंट्री में टोटल 16 स्किन बैंक्स हैं, जिसमें कि 7 महाराष्ट्र में है, 4 चेन्नई में है, 3 कर्नाटका में है और 1 मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। ठीक है। अब उसके बाद नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला टेली सफदरजंग हॉस्पिटल में ओपन किया गया है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Chandrayaan 3. This topic is important for your science and tech section. So Indian Space Research Organization is planning to retain the names of Chandrayaan 2 lander and rover, that is Vikram and Pragyan respectively, for the Chandrayaan 3 equivalents. Okay, so Chandrayaan 3 mission is basically a planned third lunar exploration mission by ISRO to demonstrate safe landing and roving on the lunar surface. It will not have its own orbiter, and there will be 3 major modules: the propulsion module, the lander module, and the rover. And the propulsion module will consist of SHAPE, that is the spectropolarimetry of habitable planet Earth, which will study the spectral and polarimetric measurements of Earth from lunar orbit. And there will also be lander payloads, which will consist of RAMBA, that is the radio anatomy of moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere, to study temporal evolution of electron density in the lunar iosphere. There will be CHAST, which will be measuring the thermal conductivity and temperature, and ILSA, which will be measuring the seismicity around the landing site. There will also be Langmuir probe, which will estimate the plasma density and its variations. The rover payloads will consist of APXS and LIBS, which will derive the elemental composition in the vicinity of the landing site. So how will this mission be implemented? Basically, a propulsion module will carry the lander rover configuration to a 100-kilometer lunar orbit. Once the lander module will make safe landing on the moon, it will start deploying Pragyan, that is the rover, and then this rover will start carrying out in situ in situ chemical analysis of the lunar surface during the course of its mobility. Okay, so the next topic is solar mean magnetic fields. This topic is important for your science and tech section. So scientists from the Indian Institute of Astrophysics, they have recently studied that how the sun's magnetic field is influencing the interplanetary magnetic space. So as per the data given by Department of Science and Technology, scientists are now one step closer to identifying the source of solar mean magnetic field. So what is solar mean magnetic field? It is the mean value of line of sight component of solar vector magnetic field averaged over the visible hemisphere, as well as its relationship with interplanetary magnetic field. And you know that sun contains the corona, that is the outer shell of sun's atmosphere, the photosphere, that is the visible surface, and the chromosphere, that is the near transparent layer just above the photosphere. And all of them have magnetic field generated by electrical currents, and they act as magnetic dynamo inside the sun. So most of the studies until now have been confined around the photosphere, but now scientists have found that this SMMF is also there at chromospheric heights, and it is related to the SMMF at photospheric heights. So the value of chromospheric SMMF is lower than the photospheric one, but of course all of them are deriving the magnetic field from the primordial magnetic field which is inside the sun, which is being said that it could be the source of the SMMF in totality. Okay. So the next topic is LIDAR. This topic is important for your science and tech section. According to a recent research report, LIDAR market could thrive at about 22% growth between 2022 and 2030. This LIDAR stands for light detection and ranging, and it's a remote sensing method which uses light in the form of a pulse laser to measure ranges from the to the Earth. So there will be light pulses which are generated, and they can even measure the distances, and they can also create a three-dimensional information. Okay, so what happens here is that let's learn from an example that you want to measure the depth of the sea. Okay, so what you would do is you would go into an airplane, you would take this lidar equipment, and then a laser would be launched into the sea,
uh, in this case the bathymetric lidar, which is of course water penetrating green light, it will strike the bottom of the sea and it will come back, and thus this traveling of this pulsed laser would measure the range of the sea, and that's how you measure not just the height, but also you can launch multiple lasers, and this way you can create even a 3D model of that particular sea. Okay, so this is how lidar works. So emitted light travels to the ground and it comes back. That's why we calculate the distance traveled. Distance traveled is then converted into elevation also. So it allows scientists and mapping professionals to examine both natural and man-made environments, and it also helps us to produce more accurate shoreline maps. So basically it's a form of remote sensing. Remote sensing is the science of obtaining information about objects or areas from a distance, typically from aircrafts or even satellites. So the next topic is Great Pyramid of Giza. This topic is important for international relations. PM Modi has recently visited the Great Pyramid of Giza during his maiden visit to Egypt. So Great Pyramid of Giza, they are basically located in the Giza Plateau on west bank of Nile River, and the three out of the three pyramids of Giza, the Great Pyramid of Khufu is the largest one and it is also the oldest one. So it was built by Khufu, the second king of Egypt's fourth dynasty, and this was first excavated using modern techniques and scientific analysis in 1880 by a British archaeologist called Sir William Matthew Flinders Petrie. Okay, so the largest Egyptian pyramid, the Great Pyramid of Khufu, has a height of about 146 meters and it has a base of about 230 meters, and it comprises of over 2 million blocks of stone. It is made of yellowish limestone blocks, and the interior of it is interior burial chamber is built of huge blocks of granite. Okay, so about the pyramids of Giza, so these are three fourth dynasty pyramids. They are designated as Khufu, Khafre, and Menkaure. So the northernmost one and the oldest is also the oldest one, and it was built for Khufu, the second king of the fourth dynasty. Okay. So the next topic is Order of the Nile Award. This topic is important for our international relations. So recently, Egyptian president has conferred the highest state honor, Order of the Nile, to Prime Minister Modi. So this is Egypt's highest state honor, and it was instituted in 1915. The Order of the Nile is conferred upon heads of states, crown princes, and vice presidents who offer Egypt or humanity invaluable services. This Order of the Nile is a pure gold collar, and this hanging from this collar is a hexagonal pendant, and they have pharaonic symbols. Uh, and anyone who receives this Order of the Nile shall be saluted upon their death. Okay, so the next topic is South African Customs Union. This topic is again important for our international relations. So due to declining merchandise exports, due to the demand slowdown in the Western countries, India is placing a renewed focus on striking a trade deal with South African Customs Union, which is the world's oldest customs union, and it was established in 1910. And its member countries involve South Africa, Namibia, Botswana, Lesotho, and Eswatini, which was also called Swaziland formerly. So its headquarters is located in Windhoek. Remember this, it is not located in South Africa but in Windhoek, and that is in Namibia. So it was initially administered by South Africa, and now this new economic structure of the union since 2002 consists of member states which are linked by a single tariff, and they have no customs duty between them, and these member states form a single customs territory in which tariffs and other barriers are eliminated on substantially all the trade between the member states, okay, for the products originating in these countries. Okay, also they have a common external tariff which applies to the non-members of this customs union. So the next topic is Skin Bank. This topic is important for your science and tech and your environment section. So recently North India's, remember this is North India, not India's. So the North India's first skin bank was recently inaugurated in Delhi's Safdarjung Hospital. So what is a skin bank? Basically it is a place where cadaveric means
taken from a corpse or a dead body. So where cadaveric skin is processed and preserved under optimal conditions so that it can be used for the benefit of burn victims. So skin can be donated after that within 6 hours from the time of death, and there is no minimum age for the donor. I'm sorry, the minimum age for the donor should be 18 years, and there is no upper age limit. But of course, certain patients like those who are suffering from AIDS, hepatitis B and C, sexually transmitted diseases, skin cancer, active skin disease, and septicemia, they are not eligible to donate their skin. So once the skin is donated, it is preserved in 85% glycerol solution, and it is stored between 4 to 5 degrees Celsius, and it can be stored for a period of up to 5 years. Okay, so we have 16 skin banks, and if we look at the geographical distribution of it, then 7 are in Maharashtra, 4 are in Chennai, 3 are in Karnataka, 1 in Madhya Pradesh, and 1 in Odisha. And after these, the North India's first skin bank has recently been opened in Delhi's Safdarjung Hospital. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.